Another important remark, every totally ordered set, that's a toe set, is always a lattice, right? Because in a totally ordered set, you know that every two elements are related to each other. That's why we called it totally ordered set, right? The example is z, uh, comma, less than or equal to. Z is a set of integers, right? Integers, and this is a relation of less than or equal to. You know that every two integers are related by this symbol. You choose any two integers, they are always related by this symbol. A is less than or equal to b, or b is less than or equal to a. That's why you can say that it's a poset, and in that case it is always a lattice. A totally ordered set is a sure shot lattice. Okay. Similarly, d8 is actually the set of all positive divisors of 8. Those are 1 2 1 2 4 and 8. So if you draw the Hess diagram, it will be something like this, straight line like this. Okay, and if you choose any two element, then you will be always able to find the least upper bound as well as the greatest lower bound. Okay. Similarly, d27 is the set of positive divisors of 27, 1 3 9 and 27, right? And you can see that that's a toe set, very similar to d8, and it is always a lattice. So you have two important points. One is that every totally ordered set is lattice, and another is that if it is not going to be a lattice, then the two set elements which will disqualify it from being a lattice is a set of two incomparable elements. You want to always spot the incomparable elements if you want to check whether the given poset is a lattice or not. Okay. Now, fourth remark, that is about this the set of positive integers with the relation of divisibility, right? That's a lattice. Uh, why? Because if you choose any two elements x and y, then you can see that you can always choose the supremum of x and y, that is given by the LCM of x and y, right? So due to just this relation of divides, you know that if you have two numbers, one is 2, another is 3, so the supremum of these three numbers will be 6, because the LCM of 2 and 3 is 6, right? And the infimum of these two numbers will be equal to 1. That is actually the HCF of 2 and 3. So this is the trick actually. Whenever you are given two numbers and the relation is of divides, then it is always possible to find the LUB as well as GLB due to this fact, because any two elements, the join of any two elements will be equal to the LCM of those two numbers, right? And the meet of those two numbers will be equal to the SCF of those two numbers. So that's why the criteria of being a lattice always gets satisfied, right? Due to this fact that you can always have a number. Suppose I give you two numbers, one is 2 and one is 9 and another is 7, right? So if I ask you what is the supremum of 9 and 7, if the relation is of divides, so the answer will be just the LCM of 9 and 7, that is 63. So 63 is the first number which is greater in relation to both 9 as well as 7. That's why it is called 63 will be supremum of 9 and 7 if the relation is of divides, right? Similarly, the HCF of 9 and 7 will be equal to 1, and that will be equal to the infimum of 9 and 7, right? So in order to find supremum, you need to find the LCM, and in order to find the infimum, you need to find the HCF of those two numbers, provided the relation is of divides, right? You can't use this LCM and SCF technique if the relation is different other than divides. Okay. Now, the next remark is for poset PS. This is power set. You know that this is a power set on some set capital S, and the relation is a subset of, right? So it's a lattice. Why it's a lattice? Because if you choose any two elements, of course the elements of power set will be sets. The elements of a power set are not just simple elements, they are sets actually, right? So if you find the join of A and B, and that will be given by A union B, right? It means that the supremum of two sets will be equal to the union of them,
This is very straightforward, because you know that A union B is the smallest set. Please hear it very carefully. You have two sets, capital A and capital B. So my question is, what is the smallest set which contains A as well as B? So the answer is A union B, right? So it means that A union B is the smallest set which contains both A and B, right? It means that A union B is going to be a supremum of A and B, right? And similarly, the meet of A and B, right, is actually equal to A intersection B. And what does mean by this thing? It means that infimum of A and B. Infimum of A and B means you need to find a set which is, you need to find the biggest set, greatest set, which is contained in both A and B. So the answer will be A intersection B, right? Okay, now the next question, determine whether the posets this and this are lattices or not. So first we'll be drawing these hash diagrams. Okay, so this is for the first one, you can see that the relation is of divide. So if you draw the hash diagram, then it will be something like this. It will be something like a straight line, because 5 will be at the top, right? And then comes I think I should draw it with the red color. Okay, so 5 will be at the top, right? And 4 divides 5, that's why you have to write 4 here, right? Then you have to write 3, then you have to write 2, then you have to write 1. Okay, so this is the example of a toe set. You can see that this is a toe set. As I told you, remark number 3, that every totally ordered set is a lattice, right? So you can spot that from the picture that it is a toe set, right? So I will write it here. It's a toe set, and which means that it's a lattice. Right. And the second one, I'm going to draw the first element, which should be at the top, is 16, and then you have 8, right? I think I missed it. Sorry, extremely sorry. This the relation was of divides, and surprisingly, nobody is stopping me. I think it's for 18. It should be 18, 16, then 8, then 4, then 2, and then 1. It's this is a lattice. The relation is of divides. Now I'm drawing the hash diagram for this. So 5 will be at the top, since 4 doesn't divide 5, so 4 has to be here, right? And similarly 3 also, 3 will be here, because 3 doesn't divide 4 and 3 doesn't divide 5. So all these 3 elements will be incompatible. And then 1. And of course you need to join this 1 with the 5 as well as 3, right? So this is the diagram, and you can see that it is not a toe set, but it's not like that a non-toe set is always not a lattice. This is not true, right? But I need to give it two elements, a set of two elements for which there doesn't exist GLB or LUB. Now please tell me, who will be telling me the set of two elements for which the supremum or infimum doesn't exist? So you have to choose, please note this remark number 2, that the possibility of non-existence of GLB or LUB is when you choose a two element set which are non-comparable actually, right? So please spot the two non-comparable elements from this diagram. If you spot this 3 and if you spot this 3 and 4, right? This spot 3 and 5, okay? या 3 and 4 भी काम कर जाएंगे, 3 and 5 भी काम करेंगे मुझे लगता है, तो इनका सुप्रीमम नहीं आ पाएगा, राइट? हाँ, supremum नहीं आ पाएगा. Okay, so if you choose 3 and 4, let me write it here. Then you can see that 3 meet 4. It means that infimum of 3 and 4, infimum of this set 3 comma
4 that is equal to 1 that exists actually. 1 is the number which actually divides 3 as well as divides 4, right? And but if you search for the supremum, that is join is equal to supremum of the set 3 comma 4, and that doesn't exist. There is no number which is divisible by 3 and 4, right? So, and of course 3 and 4 are not related to each other. Neither any member of this set B is able to qualify as the upper bound. You can see that there are no upper bounds for 3 and 4. If you search for the upper bounds, there are no elements which are succeeding 3 and 4. There is no element in this set which is divisible by 3 as it is and divisible by 4 also. So it means that supremum doesn't exist. So it's not a lattice. Okay. Now the next diagram. सोल्यूशन। कार्तिक संगर, इसमें बताइए आपको क्या लग रहा है, ये पोसेट जो दिया है ये लैटिस होगा या नहीं होगा? सर ये नहीं होगा सर। नहीं होगा मतलब आपने बड़ी जल्दी कह दिया। क्या आपने कोई एलिमेंट ऐसे ढूंढे? ये दोनों लिए आपने कौन लिए? सर है सर, हाँ ये दोनों है, ईजी है, बीडी है। हाँ तो इनका सुप्रीमम इनफिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? सर सीडी सीडी का भी है, सीडी का इसका तो होगा सर। सीडी का सुप्रीमम होगा ए, इनफिमम होगा एच, राइट? हाँ सर, इसमें एफ एग्जिस्ट जी करेगा। एफ जी इसमें करेगा, भले ये नॉन, ऐसा भी मैंने नहीं कहा है कि जब जब नॉन कंपेरेबल होंगे तो होगा ही होगा, नॉट अ लैटिस होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि अगर नॉट अ लैटिस आप चाहते हैं तो कोशिश करिएगा जो आंसर फेल होने वाली बात है वो फेल होगा तो फिर ऐसे ही एलिमेंट्स में होगा, ऐसे में नहीं फेल हो सकता वो, राइट? हाँ यस ओके, तो मैं लिख देता हूं कि इट इज अ लैटिस as for every subset of two elements, supremum and infimum always exist, right? तो चेक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल एक दो पेयर ले लेते हैं। कार्तिक कहाँ से शुरू करें? पहले ई और एफ को ले लें। यस सर, यस। ई और एफ का ज्वाइन बताइए, बड़ा कौन है ई और एफ में से रिश्ते में? एच। हाँ यस सर। ठीक है, और ई और एफ का इनफिमम बताइए, रिश्ते में छोटा कौन सा? ए होगा, वेरी गुड, ए। चलिए इसके लिए तो हो गया। और कोई और दो चूज, एफ और जी कर लेते हैं चूज, राइट? एफ और जी का भी एच ही आएगा और उसमें ए आएगा, और एफ और जी का ही आएगा। कोई और दो चूज कर लीजिए। ऐसे में भी क्रॉस में भी कर सकते। हाँ बीसी का तो हाल वही होगा जो हाल, चलिए ठीक है बीसी भी कर लेते हैं, आप जो दो तीन तो सेम ही होगा फिर। सी जी ले लीजिए। हाँ हाँ, डिफरेंट क्रॉस में लेते हैं, ठीक है। सर मैं अपने लैपटॉप की एक बार बैटरी कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, बी और जी ले लेते क्रॉस में, बी एंड जी, दिस एंड दिस, सुप्रीमम इन दोनों का, एच एंड इनफिमम ए होगा सर, इज ए होगा। चलिए और कोई क्रॉस में ले लेते हैं, सी और ई ले लेते हैं क्रॉस में, सी और ई, सुप्रीमम एच एंड इनफिमम ए। इसमें कॉमन ही आ रहा है सर, एच और ए इसमें कॉमन, ये तो तब आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे में ले लेंगे कार्तिक, तो तब सुप्रीमम आएगा जी और इनफिमम आएगा डी, है ना? क्यों? यस सर। ये जो मैंने सेट लिया था, दिस वाज फॉर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट। इफ यू चूज नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स, यस और नो? यस सर। So if you choose comparable element like this, ये तो comparable है, then their D join G will be how much? G होगा सर, और उसमें D होगा, and D उसमें D होगा। और भी दो तीन बता दीजिए। मान लीजिए आपने B और H ले लिया, सर E और B, B and H,
E or B is similar to G and D, na? So I will not repeat that. I will take D and H. Okay. Yes sir. So supremum H होगा और infimum B. Infimum? B. Infimum कौन होगा? B. Okay, fine. Yes sir. Etc. So we'll write etc. because we are not writing every pair, na? So I'm just leaving it etc. Right. So I have classified this the pair choosing technique into two parts. One is when we have two elements which are non-comparable, and the other technique is when two elements are comparable, right? So you can see that there is always existing supremum as well as infimum, so it's a lattice. Okay, now another few rules. Please Karthik, इसको पढ़िए जरा. X supremum X. नहीं, X एक्स सुप्रीमम infimum. एक्स नहीं, इसको आप ऐसे पढ़िए कि एक्स ज्वाइन एक्स पढ़िए या फिर पढ़िए सुप्रीमम ऑफ एक्स एंड एक्स, या ऐसे पढ़िए, दो बातें. Okay sir. क्यों? X join X is सुप्रीमम equals to एक्स X ज्वाइन एक्स, एंड एक्स मीट and एक्स इज X इक्वल meet टू X equals to X. So whenever you find the supremum of a set having two elements but they both are same, right? तो खुद का खुद से सुप्रीमम नापेंगे तो खुद ही आ जाओगे, मतलब अपने आप से ही कंपेयर करेंगे अगर, क्योंकि सुप्रीमम इनफीमम दो पेयर का देखा जाता है, दो एलिमेंट्स का. तो दो एलिमेंट की जगह सिंपली एलिमेंट आपने रिपीट कर दिया तो वही आंसर आ जाएगा. हाँ, ये भी लॉजिक सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. इज फाइन. फर्स्ट वाला, पहला No वाला. sir. Yes sir. Second is something like a commutative property. जैसे कि पता है x plus y is equal to y plus x and x multiplied with y is equal to y multiplied with x. This is very similar to that. So if you find the meet of x and y, that is exactly similar to the meet of y and x. Okay. Similarly, the join of x and y is equal to the join of y and x. This is also very simple, right? And the third one is associative law. अगर आपको associative law याद हो, it is just about the interchanging of brackets only. So you can see that the left hand side is having brackets here, but the right hand side is having brackets here. So it doesn't matter if you find the meet of three elements in this fashion. First you find the meet of first two, and the answer you get is then subjected to with z in order to find the meet, right? Or you can first find the meet of last two elements, and then the result is subjected to this x, something like this. I mean, it's simple, like 1 plus 2 plus 3, you write it something like this or you do something like this. The answers are always same. This is called associativity. So associativity follows here with the join operation as well as with the meet operation, right? So these are very simple. But the third one is the fourth one is interesting actually. The fourth one is very interesting, and I will write a small proof for this, right? So you should know how to prove these rules. So I'm giving the proof of fourth, rule number 4, which is of course very different, Karthik, right? Yes sir. ये अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. दो ही हो रहे हैं, एक्स और वाई. Yes sir. ओके, दो हो रहे हैं, वेरी गुड. तो पहला केस तो कार्तिक ये हो सकता है कि x प्रीसीड करे रिश्ते में y को, ऐसा हो सकता है. रिश्ते में x छोटा हो y से, क्यों? यस और नो? Yes sir. दूसरा केस क्या हो सकता है कार्तिक? केस 2. Sir X greater than Y. ग्रेटर का सिंबल नहीं है प्लीज, ये ग्रेटर का सिंबल नहीं है, ये प्रीसीड्स और सक्सीड बोले. ये कर्व बना है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये कर्व है yes थोड़े sir, वो सिंबल थोड़ा है. tilted सा बनाया था. चलिए दूसरा केस क्या हो सकता है? y. Sir X precedes Y precedes X. ओके फाइन. और तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों कैसे हो? इनकम्पेरेबल. क्यों? Yes sir. ये तो मतलब वो x ये भी ना हो और साथ साथ में ये भी ना हो. दो ही बातें हो सकती, तीन बातें हो सकती हैं, और तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता. क्यों? Yes sir. चलिए लेफ्ट साइड ले लेते हैं. ये वाली, ये लेफ्ट साइड. ओके, चलिए देखिएगा. LHS is this thing, x and x join y.
क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? इसका आंसर मतलब होता है सुप्रीमम, मतलब कि जो बड़ा होता है वो इसका आंसर आता है, जो भी बड़ा होगा। कौन बड़ा है दोनों में से इस केस में? एक्स सर। अरे इस ऊपर से देख के नहीं, बताओ बड़ा कौन है। वाई है सर, सॉरी। हाँ, वाई वाई बड़ा है, वाई बड़ा है। एक्स और वाई में से वाई बड़ा है। अब बताओ इसका आंसर कितना आना चाहिए? इन दोनों में से छोटा कौन है? एक्स छोटा है। एक्स छोटा है ना, तो आंसर कितना आएगा? एक्स। तो देखो यही राइट एक्स। हैंड साइड थी, राइट यस हैंड सर। साइड एक्स ही है। ठीक है, चलो अब ये दूसरे केस के लिए आप प्रूफ करोगे। फिर से एलएचएस आप उठाइए। व्हाट इज एलएचएस? सेम थिंग, एक्स एंड एक्स और वाई। चलिए बताइए आंसर इसका। सर व्हाट विल इस बी द केस आंसर में ऑफ दिस हो टेबल? जाएगा एक्स, एक्स जॉइन एक्स एक्स, हो जाएगा सर। एक्स एक्स ही आ मीट जाएगा। एक्स, सॉरी। हाँ। व्हाट इज एक्स यस सर। मीट एक्स एक्स है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1? व्हाट इज एक्स मीट एक्स एक्स है। रूल नंबर 1 से? एक्स आएगा। दैट इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट नाउ द केस नंबर 3, तीसरा केस, जब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही ना हो। क्यों? ओके यस सर। चलिए अब क्या होगा? एक्स एंड एक्स और वाई। इसका आंसर कितना आएगा? कार्तिक, सर इसमें क्या कार्तिक होगा? कुछ और हो तो वो तीसरा एलिमेंट होगा ना। फिर अब ये ना तो ये बड़ा है ना ये बड़ा है, तो कोई तीसरा बड़ा होगा ना इनसे। क्यों? यस और यस नो? सर। मतलब कि ये वाली पिक्चर होगी ना, ना तो एफ बड़ा है ना जी बड़ा है, तो एच होगा। कोई और थर्ड थर्ड एलिमेंट विल बी देयर इन द पोसेट व्हिच विल बी ग्रेटर देन दीस टू, बिकॉज यू नो दैट इट्स अ लैटिस ना। ये कहा गया है कि ये लैटिस है। दीस रूल्स फॉलो इनसाइड अ लैटिस। आई मीन ये जो एक्स और वाई हैं ये लैटिस के एलिमेंट्स हैं, राइट? दीस रूल्स आर फॉर यस सर। लैटिस। आई शुड ऐड इट हियर कि इंपॉर्टेंट रूल्स इन इन फॉर लैटिस, फॉर लैटिस। क्योंकि लैटिस की डेफिनेशन में क्या कहा गया था कार्तिक, कि किन्हीं भी दो एलिमेंट का सुप्रीमम या इन्फीमम होता ही होता है। कहा था ना ये यस सर। लैटिस की डेफिनेशन में। तो फिर इसका मतलब ये है कि ना तो ये बड़ा है, एक्स बड़ा है, देखिएगा ना तो एक्स बड़ा है ना वाई बड़ा है, लेकिन इनसे फिर तीसरा कोई बड़ा जरूर होगा ना। इनका सुप्रीमम तो निकलना ही है ना। ऐसा नहीं कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आप लैटिस के अंदर काम कर रहे हैं। किसके अंदर काम कर रहे हैं? लैटिस के अंदर। लेट। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, हाँ किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सुप्रीमम आएगा ही आएगा, भले ही उन दोनों में से नहीं आएगा, लेकिन उनसे बड़ा फिर कोई और होगा। क्यों? राइट? यस सर। राइट। तो मैं लिख दूं जेड होगा, फिर वो कोई तीसरा एलिमेंट यस सर। होगा। तो ठीक है, अब ये बताइए कि एक्स और जेड में से छोटा कौन होगा? सर इमेजिन एक्स करिए इस छोटा चीज होगा को। सर। एक्स एक्स ही छोटा होगा। होगा क्योंकि आपने जो पिक्चर इमेजिन करी है वो एक्स और वाई ऐसे नॉन कंपेरेबल है। आपने बोला कि जेड उनसे बड़ा होगा, राइट? तो अब हम्म। एक्स और जेड का आपसे वो पूछा जा रहा है, इन्फीमम पूछा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एक्स ही आएगा। ठीक है, यस सर। ओके। सो आई शुड राइट एक्स हियर इज इक्वल टू RHS. So this I assume that I mean here in this step I assume that let the join of x and y is z। कुछ ना कुछ तो हो गई ऑफ कोर्स, राइट? कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन अभी ये वाला पार्ट भी कार्तिक बचा है। आपने प्रूफ कर दिया इसको तीनों पार्ट से, और कोई केस हो नहीं सकता। नाउ विल ट्राई टू प्रूव दिस। पहला केस ठीक है, ये बदल देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरी इस बार, ठीक है? ये सिंबल्स बदल हाँ। जाएंगे यहाँ पे, और ये यस वाला सर। सिंबल है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इन दोनों में से छोटा कौन है? तो इसमें एक्स छोटा। छोटा है सर। वेरी गुड। और एक्स का खुद एक्स के साथ जब निकालते हैं तो एक्स ही आता है, ये तो ठीक हो गया। दूसरी बारी में भी फिर से सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। इस बार यस बताना है कि इनमें से छोटा कौन है? सर। वाई छोटा है सर। वाई छोटा है। और अब एक्स और वाई में से कौन छोटा है? एक्स सर। कुछ गलती हो रही है, सॉरी। ये और का सिंबल है, हाँ। इनमें से कौन नहीं, बड़ा है? हाँ, सॉरी, दूसरा सिंबल आएगा। यस सर। बड़ा है। हाँ। हाँ बड़ा है, तो एक्स बड़ा है, दिख रहा है आपको? एक्स बड़ा है, सक्सीड कर रहा है, हाँ। राइट में चेक। लास्ट यस केस, सर। यहाँ पे ये वाला सिंबल, यहाँ पे ये वाला सिंबल, यहाँ पे ये वाला सिंबल, और इनमें से इनसे बड़ा कौन है? सर इसमें बड़ा जेड है इसमें तो। नहीं नहीं, तो लेकिन लेकिन यहाँ तो ये छोटा था ना, ये तो इन्फीमम का है ना। इस बार यहाँ ये था ना, आपने एज्यूम किया कि एक्स और वाई का, एक्स और वाई तो इनकम्पेरेबल है, तो एक्स और वाई में से छोटा कौन सा है? कोई तीसरा नंबर। इस बार जो पिक्चर है वो कुछ आपके दिमाग में ऐसी आएगी पिक्चर। सी, एक्स इधर है, वाई इधर है, एक्स इज एक्स, तो जेड विल बी समवेयर हियर, ऐसा पिक्चर होगा ना, तभी तो ये लिखा आपने। जो। इज इट यस फाइन? सर। यस क्यों? हाँ, तो अब बताओ इसका आंसर बताओ, कौन बड़ा है एक्स और जेड में से? सर। एक्स होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है। लैटिस क्या चीज होती है? लैटिस कैपिटल एल
इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव तब कहते हैं, राइट, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं मैथमेटिक्स में क्या होती है, जैसे पढ़ा होगा आपने x इंटू वाई प्लस जेड, तो मैथमेटिक्स में आप इसको क्या लिखते हैं, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ये लिखते हैं ना, इज इट यस फाइन, सर, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब कौन किस पे डिस्ट्रीब्यूट, डॉट डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस पे या प्लस डिस्ट्रीब्यूट हुआ डॉट पे, क्या बोलते हैं इसको, सर डॉट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों पे, प्लस में, हाँ, क्योंकि वाई डॉट और दो जेड। बार आ चुका है ना, राइट, वेरी गुड। तो ऐसे ही कुछ ये भी है, एक बार ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है मीट पे और एक बार मीट डिस्ट्रीब्यूट होगा ज्वाइन पे। समझ गए होंगे, आपकी रूल्स बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि आप मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं। एक बार मैंने यहाँ यस ज्वाइन का सिंबल रखा है और इधर मीट का रखा है, तो एक बार ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एक्स ज्वाइन वाई एंड एक्स ज्वाइन जेड, राइट। सिमिलरली दूसरा रूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस उन्हें कहते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स लाइक एक्स वाई एंड जेड, सबके लिए ये बात सच होनी चाहिए। अगर किसी के लिए भी ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, तब आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल में काम करते हैं, एग्जाम्पल में बना लेते हैं पहले। एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने ये बना लिया, स्ट्रेट लाइन ही बना ली, यहाँ पे लिखा हमने 8 4 2 1, राइट। और ये जो एग्जाम्पल है ये है डी 8 with respect to operation divides, right, this is this is distributive lattice, राइट। और ये जो एग्जांपल है नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट इसमें चूज करेंगे, एक्स वाई जेड, और यू चूज एक्स वाई जेड, और यू चूज एक्स वाई एंड जेड, these two property will always be satisfied, okay. But in this example you can choose three elements x y and z such that either of these properties is not satisfied, right। so इसके लिए तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए लिखने का मतलब है कि वो तीन तीन बार कौन कितने एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं। इन चार एलिमेंट्स में से तीन तीन करके आप 4c3 चार तरीकों से चूज कर सकते हैं, हालांकि वो भी मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लिख भी सकता हूँ मैं, राइट कार्तिक। यस सर। तो इन चार में से तीन तीन सेलेक्ट करने और ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है, तो ऑफकोर्स बराबर आएंगी इसमें। तो चलिए मैं एक दो तो कर देता हूँ, आप भी कुछ चुन लीजिए, कोई तीन नंबर जो आपको अच्छे लगे चुन लीजिए इनमें से। सर 148। 1 4 8 एंड 8, ओके, चलिए चेक करते हैं। पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 ज्वाइन 4 एंड 8 इज इक्वल टू, ये बराबर आना चाहिए, 1 ज्वाइन 4 meet 1 or 8, this is what you want to prove, yes or no? यस सर। Okay, now Karthik will compute both sides simultaneously और फाइनली देखते हैं दोनों का आंसर, दोनों साइड बराबर आती कि नहीं आती। पहले आप मुझे लेफ्ट साइड सॉल्व करके बताइएगा क्या आएगा। ये 1 ज्वाइन 4 और 8 में से कौन इनफिमम है, 4 और 8 में से कौन इनफिमम है, बताइए सर कार्तिक। 8 इंफिनिटी। इनफिमम, इनफिमम छोटा। 4 है सर, सॉरी सॉरी 4 है, हाँ। 4, 1 और 4 में से कौन सुप्रीमम है, 4। रिश्ते में सुप्रीमम, मतलब ऐसे में सोचना कि 4 देखने में बड़ा है, रिश्ते में सुप्रीमम, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है 4, ठीक है। हाँ यस सर, वही सोच रहा था मैं। यस सर। ऐसे इसमें रिश्ते में, रिश्ता पता है ना किस चीज का रिश्ता है, डिवाइड्स का रिश्ता है, रिश्ते में यस कौन सर। बड़ा है, यस। कौन 4। बड़ा है रिश्ते में, 4 4, इन दोनों में रिश्ते में कौन बड़ा है, 8। 8 बड़ा है। 4 और 8 में से रिश्ते में कौन छोटा है, सर 4। 4, तो बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। यस सर। ऐसे दूसरे वाले में भी चेक करना है, मैं बदल दूंगा सिंबल्स को, एंड 1 यहाँ मीट हो जाएगा, 4 ज्वाइन 8 इज इक्वल टू 1। चलिए ये बताइए
लेफ्ट साइड का आंसर बताइए। 4 और 8 में रिश्ते में कौन बड़ा है? सर 8, 8 बड़ा है। एंड इनमें से छोटा 1 है। 1। सिमिलरली 1 और 4 में से छोटा 1 है, और इसमें भी 1 है। 1 और 1 का 1 के साथ 1 ही आएगा। 1 ही तो होगा। इस तरीके से आप, हाँ, इस तरीके से आप बाकी पेयर के लिए भी एटसेट्रा लिखने का मतलब है कि आप बाकी इसके लिए, बाकी पेयर के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी 3 लेने हैं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 नहीं 3 लेने हैं, ठीक है। यस सर। अब राइट हैंड साइड वाले में देखिएगा, इसमें मैं 3 ले रहा हूँ कि इफ अगर मैं ले लूँ, ए ले लूँ, सी और डी को ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। यस सर। देन ए और नहीं, सॉरी, ज्वाइन सी मीट डी should be equal to A join C and A join D. Infimum of C and D. See the picture. Which element is related to both and is smaller in relationship? It's B. B is the element which divides. Yes, Keshav Dev Kapil, absolutely right. So it's B. Now A और B का मुझे आप सुप्रीमम बता दीजिए। A और B का सुप्रीमम कौन है? केशव देव कपिल, A और B में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा, या हो सकता है इन तीनों से बड़ा? नहीं, ए ही बड़ा है। आप भूल गए, ए भी तो बड़ा है। इमीडिएट जो बड़ा है वो ए है। एक्चुअली में ई इज ऑल्सो करेक्ट, बट ई इज द अपर बाउंड, इट इज नॉट द लीस्ट अपर बाउंड। आपको बड़े ढूंढने, फिर बड़ों में छोटा भी ढूंढना है। तो अगर आप अपर बाउंड्स का सेट बनाएंगे तो ई भी आएगा और ए इज ऑल्सो देयर, सो द लीस्ट अपर बाउंड विल बी ए, नॉट ई। ओके, हाँ ठीक है, तो इट्स विल बी ए। सिमिलरली ए और सी में आप बताइएगा सुप्रीमम कौन सा है? इट्स ई, राइट। एंड ए और डी में भी सुप्रीमम, दैट विल बी, ये क्या कुछ गलती हो रही है हमसे? हाँ, दैट विल बी ई, फाइन। तो इक्वल नहीं आना चाहिए, दैट विल बी ई। नाउ the e and e meet e will be e, so you can see that it's false. It means that it is a non-example, it is not a distributive lattice, right? I will write it here, हेलो सर। not। हाँ बोलिए कार्तिक। हाँ सर, ऑडिबल है? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज, बीच ठीक है में नहीं आ सर। रही थी। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे? ये यस सर, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो क्यों नहीं है? ये तो हो गया ना, और ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इसे कहते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे होता है complement of some element. So this is the meaning of complement of some element. So you have some element A and you need its complement, then the complement, the join of the element and its complement is, and the meet of A and A star gives you the least element. Are you getting my point? So this is what we mean by complement. ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी आ जाए, ऐसा हो सकता है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक both situations can happen. You can get more than one complement, or sometimes no complement is there. So I will just write this picture, this one, right? So I will clone this picture and I will. So let us denote the top element. There is a greatest element by symbol I and the least element by symbol O, right? So this is just a notation. Do not worry about this. These are not compulsory. In few textbooks they write it 1, and for the least element they write 0. Okay, so that depends on you actually. Okay, now you can see that if you choose an element A, right, here A is the element which belongs to L, so it's lattice. Okay, so if we are going to find the complement of A, then those will be C, because and D, if you find the supremum of A and C, if you choose that C is the complement of A, अगर आप कहते हैं कि C complement है, कोई कहेगा C complement है और कुछ लोग कहेंगे कि D complement है, दोनों लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि A और C का जब मैं सुप्रीमम निकालता हूँ कार्तिक, तो सुप्रीमम कितना आएगा इन दोनों का? सर आई आएगा। और इन्फीमम कितना आएगा इन दोनों का? सर ओ। वो आएगा। और अगर मैं ए का डी के साथ करता यही चीज, तो भी क्या यही होता? वो भी सेम ही होता सर, हाँ। सेम ही होता। तो कहना सही है कि ए के दो कॉम्प्लीमेंट है, क्यों? यस सर। ठीक है। और एक ऐसा पिक्चर भी मुझे आपको बना के देना पड़ेगा कि जिसमें उसके कॉम्प्लीमेंट होते ही ना, क्यों करते हैं?
यहाँ पे रख देते हैं और फिर इसके नीचे एक और, तो ये हो गया डी। अब देखो ये लैटिस है, पहले तो ये लैटिस होना जरूरी है। कोई भी दो एलिमेंट हाँ चूज कर लीजिए, ये चूज कर लिए, इनका सुप्रीमम भी है इन्फीमम भी है, राइट। इफ यू यस सर। चूज बी एंड सी देन सुप्रीमम एक्सिस इन्फीमम, तो इसका मतलब लैटिस तो है, इट इज अ गुड लैटिस, राइट। ओके, बट इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पूछूं मैं आपसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो इसका आंसर ही आप दे नहीं पाएंगे। ए बिलोंग्स टू एल, राइट, बट complement of A doesn't exist. As there exists no element, there do not exist actually, do not exist an element y मान लेते हैं या a स्टार कह लेते हैं, a स्टार belonging to R such that a और a स्टार का ज्वाइन करके तो I आ जाए और मीट करके 0 आ जाए। कैन यू फाइंड सम एलिमेंट इन दिस पिक्चर सच दैट दिस होल्ड्स कि ए, जैसे ये ले लिया आपने, ए और बी का सुप्रीमम कितना आएगा आई, लेकिन इन्फीमम कितना आएगा कार्तिक? सर सर डी या ओ? डी आ जाएगा। ओ कैसे आएगा? डी आएगा ना। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? पहले लोअर बाउंड ढूंढ लो सारे के सारे। डी इज लोअर बाउंड, यस और नो? यस सर। ओ इज आल्सो लोअर बाउंड, यस और नो? यस सर। बट विच इज ग्रेटेस्ट अमंग देम? डी होगा, डी होगा, यस सर। डी होगा ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। फर्स्ट यू फाइंड ऑल लोअर बाउंड्स, देन यू सर्च फॉर द ग्रेटेस्ट। सो डी इसका वो आ रहा है, इन्फीमम आ रहा है, बट आप चाहते हैं कि इन्फीमम 0 हो, राइट? क्यों? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? And if in lattice it is possible that for every element there's a unique complement, then we call it complemented तो हर lattice. एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो तब उससे हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो, यूनिक नहीं कहना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे तो उसे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ये लाइन को।